इंग्लिश 201 के मिड टर्म के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपके पास क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ और उनके आंसर्स के साथ हाजिर हैं। स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बोथ ए डिनोटेटिव मीनिंग एंड ए कॉनोटेटिव मीनिंग? कंटेंट वर्ड्स। आंसर ये पेज नंबर 57 से आप वेरीफाई कर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज द वर्ड्स one chooses to state one's message say much more than their dictionary definition. Semantics. Which of the following concerns the careful use of language to express meanings? Stylistic accuracy. If you are writing a persuasive message, what are the common ways of establishing your credibility? All of the above. तीनों हैं इसके आंसर. How can you make your message effective? Make them practical, factual, concise, clear, and persuasive. Which section of a resume creates most disagreements among experts about its relative disadvantages and advantages? Career objectives. Which of the following should be done when writing recommendation letters? Include only relevant and factual information. Which one of the following is more effective? Technical communication, oral communication? Which one of the following options should be used during business correspondence? Bias-free language. Which one of the following can create immense difference between classroom communication and job communication? Size of audience. Which of the following suggests implication of a word or suggestion separate from the usual definition connotation? Which of the following is generally organized by direct approach and receives a favorable reaction? Good news message. Which of the following are real but unnamed reader? Phantom readers. How many aspects does accuracy have? 3. What can be considered as the heart of a report? The introduction of a report. ये उसकी थोड़ी नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है. What is the last thing you need to do before you get ready to distribute your document? Proofreading. डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसकी प्रूफ रीडिंग करनी चाहिए. Which of the following is not used in external business communication? Memo. मेमो जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड यूज़ होता है, वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है. चूज करेक्ट ऑप्शन. टू डिकोड ए मैसेज इज टू इंटरप्रेट ए मैसेज. Type which of the visual aid is most difficult to execute effectively? Handouts. Handouts are difficult to execute. Which of the following is usually more vivid than long ones and improve the readability of a document? Short words. Which format should be used if the document will be sent to outside of individual letter? Which question is used to ask about residential status? Where are you from? How can you make the following statement concise? There are only 4 rules for a company. Every employee is bound to follow these rules. There are 4 rules that must be observed. Which of the following is promoted by simple direct language? Stylistic clarity. Which of the following is used as brief informal reports within an organization? Memo. Select a statement about. अच्छा स्टूडेंट, अभी मेमो के ऊपर क्वेश्चन आया था ना कि जो एक्सटर्नल के लिए कौन सी यूज़ नहीं होती, तो वो मेमो था. तो जो अब ये यहाँ पे उसी ने वही का क्वेश्चन को थोड़ा बदल के कहा, इनफॉर्मल रिपोर्ट यानी कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इनसाइड यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मेमो यूज़ होता है. सेलेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट इज़ नॉट ट्रू. योर परफॉर्मेंस इन बिजनेस विल नॉट बी जज्ड बाय योर कम्युनिकेशन एबिलिटी. यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप बोलने में बड़े अच्छे हैं तो ये इज नॉट दी एबिलिटी टू जज योर परफॉर्मेंस इन योर एबिलिटी इज नॉट जज बाय योर. बायस लैंग्वेज दैट माइट अफेंड द ऑडियंस इज बेस्ड ऑन कल्चरल बायस, जेंडर बायस. जेंडर बायस जैसे मेल फीमेल और इस तरह कल्चर बायस जैसे मुस्लिम कल्चर से माइट बी अफेंड द ऑडियंस. बायस लैंग्वेज होती है वो.
Why important observation, suggestion, objection should be written to create permanent records. Which three types of readers usually exist? Phantom reader, future reader, complex reader. To whom usually goodwill letters are written. Customer को goodwill letter लिखे जाते हैं. If your message is specific, definite, vivid, which of the following principle has been implied? Concreteness. Which guideline should be followed to ensure courtesy? Tino, all of the above. Sincerely, tactful, thoughtful, appreciative, use expression, show respect, omit irritating expression. Which of the following factor enable you to evaluate the effectiveness of your message feedback? Which of the following can make a meeting unsuccessful? Holding a meeting when a memo or other business message would have done the job. What is meant by a term denotative? It refers to the literal meaning of word. Where can we apply 7 C's? To written and oral communication में 7 C's apply होते हैं. How the credibility of a communicator can be semantically analyzed through communication probe. While writing persuasive message, which four things should be kept in mind about your audience needs and appeals? Emotion, logic, credibility, semantics. Which type of letter not only conveys information but also establishes a contractual relation between you and the organization? Acceptance letter. जब भी आपको रखा जाता है acceptance letter. Why do experts read technical and scientific document? तीनों all of the above. Maintain, expand general expertise, obtain specific answer, research, writing, evaluate, document. What is the emphasis of a functional resume? Provide functions, tasks the applicant can perform. How many steps are essential for successful oral statement? 7. What are the which of the following is primary vehicle for communication within an organization? मेमोरेंडम या मेमो जो जिसे कहते हैं. ऊपर भी 2 दफ़ा ये क्वेश्चन है. विच फ्रेज शुड बी यूज वाइल मेकिंग. आप देखें ये क्वेश्चन को एक सेम आंसर को 3 मुख्तलिफ क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है. इंटरनल के लिए क्या होगा, एक्सटर्नल के लिए क्या नहीं होगा. तो अब ये प्राइमरी कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा ये क्वेश्चन है. विच फ्रेज शुड बी यूज वाइल की मेकिंग ए प्रेजेंटेशन. प्लीज़ फील फ्री टू इंटरप्ट मी विद क्वेश्चन. जब भी आप प्रेजेंटेशन पेश करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है. विच फ्रेज इज करेक्ट. व्हेन वर यू बॉर्न. इनमें से ये करेक्ट वर्ड है, सेंटेंस है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट व्हेन यू डोंट नीड इमीडिएट फीडबैक बट यू डू नीड स्पीड. इलेक्ट्रॉनिक मैसेज यानी कि आपने किसी को फौरी जल्दी भेजना तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज यूज़ होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट ग्रुप द आइडिया एंड देन पुट देम इन सीक्वेंस. ऑर्गेनाइजिंग ए मैसेज. A letter to report a customer from an employer being which kind of communication? Official communication. Which of the following aims at gathering specific information? Letter of inquiry. Which of the following is best when you want immediate feedback? Oral medium. Which is farthest in past? Month ago. यानी कि ये बहुत ज़्यादा पुराना हो जाएगा. Which phrase is used during a presentation? Thank you very much for your time today. Which of the following are included in functional words? Conjunction, preposition, articles, pronouns. Which of the following is achieved through a balance between precise language and familiar language? Clarity. Letters are usually just one page and consist of 3 sections: form, front matter, body, and matter. Which of the following is used in a letter to emphasize a point or to include a brief personal message and notes? Which of the following should be essential considered during speeches and presentation time? Which of the following use salutation? Which of the following use salutations? Letters. What strategies should be opted for writing to technicians? ये तीनों technicians के लिए. Keep introduction, background information, more information accessible, provide short definition, explanation, unfamiliar terms. Claim letter is also called complaint letter. Which of the following can be defined as follow? It is not merely politeness with mechanical insertion of please and thank you, rather it is politeness that grows respect and concern for others, courtesy. Which of the following are an essential component of employment process? References. Which of the following is the basis of courtesy? You attitude.
A fault in communication procedure where the meaning of message is lost in translation for intention to language or from language to understanding is called distortion. यानी कि किसी भी चीज़ के स्पीच के दौरान या ओरल कम्युनिकेशन के दौरान कोई बीच में कोई गैप आ जाए या कोई इंटरप्शन आ जाए तो वो कहते हैं डिस्टॉर्शन. What is the goal what is the goal of a non-conventional resume? Put the most important information first. Non-conventional में most important information first लिखते हैं. Why comparison is useful for paragraph development? It emphasizes similarities. Which of the following complementary clause is accurate in general letter writing? जनरल लेटर राइटिंग में क्या चीज़ें कम्प्लीमेंट्री क्लोज होती हैं. योर उसके एंड में लिखा जाता है, लेटर के एंड में योर सिंसियरली या सिंसियरली या योर रिस्पेक्टफुली. ये तीनों चीज़ें हैं, इनमें से कोई एक आप लिख लें जब भी लेटर लिखें. ये तीनों यूज़ होंगी. इस क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज़ मीन बाय टर्म कॉनोटेटिव? इट रेफर टू द एसोसिएशंस दैट आर कनेक्टेड टू ए सर्टेन वर्ड. In which of the following message categories would be sales and marketing message persuasive? Which plan or model mostly used in business messages? तीनों सारे ऑल ऑफ दिया हुआ. इसका आंसर है लॉजिकल प्लान भी होता है, इमोशनल अपील भी होता है, एडा मॉडल भी होता है. When you are writing routine message, kind of approach will be used direct approach. Which of the following you should avoid when using writing a claim letter? Claim letter में complaining tone आपको नहीं डालनी चाहिए. ये इसका. Which of these word is not a synonym for business? बिजनेस के लिए जो और वर्ड यूज़ हो सकता है, एंटरप्राइज भी हो सकता है, प्रोजेक्ट भी हो सकता है, वेंचर. लेकिन कैपिटल जो है वर्ड वो बिजनेस के लिए नहीं यूज़ होता. साइनोनिम का मतलब होता है उससे मिलता जुलता मानी या लफ्ज़. नॉट अ साइनोनिम. कैपिटल इसका आंसर है. Which of the following gives you an opportunity to get your message across to a skeptical or hostile audience? Indirect approach. जहाँ पे ऑडियंस हॉस्टाइल हो या स्केप्चुअल हो या बहुत इस तरह से शोर करने वाली हो या गुस्सीली हो, तो वहाँ पे आपको इनडायरेक्ट अप्रोच यूज़ करनी चाहिए. Which of the following the process of drafting your message composing? A sentence consists of two parts. One is a subject which is second. पहला सब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है. सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट, सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट. विच ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर सक्सेस टू मैसेज बाय लीविंग ऑडियंस विद द फीलिंग ऑफ देयर पर्सनल वेलफेयर इन माइंड? कर्टियस क्लोज, यानी कि अच्छे अल्फाज में उसका एंड करना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज वाइल आंसरिंग द फोन? व्हाट डू यू वांट, यानी कि किसी को भी फ़ोन पे आंसर करते हुए ये नहीं कहना चाहिए व्हाट डू यू वांट. Select the statement about the communication process that is not true. Your performance in business will not be judged by your communication ability. It is not true. True क्या क्या है? Communication is vital. Every part performance is judged by communication ability. Communication takes many form, oral, written or computer. अच्छा, next question. What is the extremely important implicit goal of a business document? To establish a relationship. Which one is not an optional part of a letter? लेटर का ऑप्शनल पार्ट क्या नहीं होता? सैल्यूएशन भी होता है, एनक्लोजर भी होता है, सब्जेक्ट लाइन भी होता है, अटेंशन लाइन नहीं होती उसमें. नॉट एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ लेटर. अटेंशन लाइन नहीं होती. Which of the following three steps are involved in planning a sales letter? Determine the main idea, define the audience, choose the format. Communication can be defined as dash the activity of conveying information. Where can you apply 7C to written and oral communication? में 7C इस्तेमाल होंगे. 7C पता है ना आपको? courtesy, correctness, इस तरह ये completeness वगैरह. अच्छा स्टूडेंट, ये कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इनके आंसर भी दिए हुए लेकिन वो लंबे हैं. मैं आपको क्वेश्चंस बताता जाता हूँ तो आप ये देख लें. डिस्क्राइब ब्रीफली स्टोरी टेलर टूर. अच्छा, व्हाट डू यू नो अबाउट एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट? विच फॉर्मेट वन शुड परसीव वाइल राइटिंग ए रिपोर्ट? what are the functional words and which functions they perform? What is the coherence and why it is important?
What is the difference between formal and informal letter? Write down the techniques that are used to get the reader's attention and interest. What are the characteristics of well-organized message? Have you ever heard the term persuasive message? What is ADA? What is a business letter? And list at least 3 types of business letter. ये इसका आंसर सर लिखे हुए हैं. Give the guidelines for positive close in a bad news. Write down 5 advantages of using written medium in business communication. What is the difference between cover letter and resume? What are the benefits of completeness in message? What is meant by correctness? Explain. ये एक लंबा सा क्वेश्चन है, तो छोड़ देंगे. What is meant by defining objective? What is the define the term transitions? How many parts does the indirect plan consist of? What is the purpose of writing professional objective resume? How a message can achieve good organization? Which components are included in front matter? How will you establish sequence of organization pattern? Good news message, bad news. What do you know about phantom readers? Which factors should be kept in mind while editing the message? Which characteristics is a more important part of correctness? Which characteristics ensure completeness to a document? Describe and explain any 5 characteristics of conciseness. What does the phrase readers create meaning? What is a bad news message? What do you understand of the phrase readers response sharpness? Differentiate between direct and indirect approach. What are the basic strategies for writing bad news message? Define the term stylistic accuracy. Briefly describe briefly a sectoral stylistic and contextual clarity. Explain phrase readers react on a moment by moment basis. What are claims and adjustment? How you write a plan and sales letter. तो स्टूडेंट ये कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे. मैंने जब इसका सब्जेक्ट का मिड टर्म दिया था, मुझे सब्जेक्ट में बड़े आसान से क्वेश्चन आए थे. तो ये था आज का हमारा वीडियो. अच्छी लगे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें. बहुत बहुत शुक्रिया.